start the different types of violence the women face in the public spaces as they go outside the family. In this context, I had told you what are the types of violences, and we will start with eve teasing. Eve teasing kahle pila mane, what do you mean? The sexual harassment of people through verbal abuse, एणु तेणु कथबार्ता करी एणु तेणु कमेंट करी कहिबा एंड डिमीनिंग vulgar gestures is defined as eve teasing. आमे जेतेबेले अति खराब भाबरे अशालीन भाबरे भाषा प्रयोग करू किंबा अशालीन भाबरे तांको किछि कथबार्ता करू किंबा अशालीन इंगित आमे देखै थाउ, we say that is eve teasing. एटा बहुत समय रे कॉमन होतुबो. You must be knowing when you are coming, you are traveling in a bus, you are coming on the road, you are coming to the college, you find people take pleasure in it. बहुत समय रे आमे कौन करू एथिरे गोटे माने आमे को लागे it is a pleasurable thing. But do we ever think the pain it inflicts on whom we are doing it? And it actually what happen, whistling करू आमे बहुत समय रे we go on doing what you say very lewd gestures, whistling, staring, आमे जन को अनो गोटे अशालीन भावरे and touching inappropriately, passing sexually explicit comments and singing obscene songs, then all these things they actually are known as eve teasing. जने जाउची आमे ता गोटे अशालीन भाषा कहूचे गोटे खराब माने आइटम सॉन्ग आनी गायिकी ताकू शुणाऊचे ताकू लगे से चलवा बेले तार ये कला बेले आम जो ताकू कहूचे ता प्रति इंगित करी कहवाटा को आम eve teasing कहू. एंड दिस इज अ पब्लिक एक्ट ऑफ सेक्सुअल एंड इट इज वेरी वेरी कॉमन. बहुत जगार केवल यहाँ छोट पिला करा जाए नहीं, प्राप्त वयस्क माने करा जाए नहीं, परिपक्व बयस आम वयस्क लोक बहुत समय छाड़ू ना आम एणु तेणु करी कहू. गाँ दांडे जदि आम देखा जड़े परिपक्व वयस्क नारी जो जाऊे अनेक समय आम भावु इट्स ए प्लेजर आम कहीदबा कहीदेले आम भावु वी आर ग्रेट आम कहीचु किंतु आम जानूनी ये जो कहवा द्वारा यहीटा मध्य गोटे प्रकार हिंसा. आमे कहू आमे तांको हाथ उठाई नाऊ किंतु हाथ न उठाइले मध्य तांको जो स्पर्श करथाऊ तांको जो भाषा प्रयोग करथाऊ these are also what are known as your eve teasing. And ये जो इटा साउथ एशियन कंट्रीज रे this is a very common form of violence. जदि आमे देखिबा इंडिया, नेपाल, Pakistan, these things are very very common and there are n number of cases of eve teasing. बहुत समय रे आमे eve teasing टाकू गोटे भाबू जे पौरुषर गोटे अंश आमे भाबू आमे जदि कही दे पारिबो बेले बेले पिला पिलांक मध्य रे मध्य तुमे देखिथिबो लाके किए कही दे पारिबो तेनु जे कही दे पारिबो आमे ताकू मर्यादा पुरुष बोली भाबू. We think that this boy has mustered courage to just give such comments to the girl. So but this is not at all a good thing because this is a type of violence though verbal in nature, but it is a violence because it affects the dignity of the girls. केबे तुमे भाबिकरी देखिछ को माने तुमे श्रेणी गृह रे अच्छ पिला माने मु पचारुची प्रत्येक झियो माने निश्चय यार शिकार केतेबेले ना केतेबेले हेइथिबो. तुमे इंडिविजुअल हेइथिबो किबा ग्रुप रे हेइथिबो, यू माइट हैव बिकम vulnerable to eve teasing either individually or in groups, but it affects. I will ask you the question, doesn't it affect you for some time? बेले बेले अल्प समय पे लगे बेले बेले बहुत समय पे लगे and it creates a terror and horror in you. मु भाबे नाई से पिला बसीची जीबिनी से बाट दे जीबिनी. So this prevent me from enjoying my rights and I cannot actually move out freely in this world. And therefore आमे के बेले बेले झियो माने मध्य एबे
पुओ मानकु कहउचंती किंतु आमे देखुचे बेसी पुओ माने झियो मान कहउचंती से पुओ हुअंतु किंबा झियो हुअंतु everyone should refrain oneself from going for eve teasing. If you look at our Indian penal code, you will find that in Indian Bharatiya Pingal code re ame jodi dekhiba section 294 of the Indian penal code states that if anyone does any obscene acts in a public space, जदि किए कोनोसी अशालीन जिनस कोनोसी गोटे सर्वसाधारण स्थान रे कला और सिंग रिसाइट और अटर एनी obscene song जदि कोनोसी गोटे खराब अशालीन गीत गाइला सर्वसाधारण स्थान रे and words in a public place or even a place that is close to a public place, such an act causes annoyance to others and it will amount to an offence under section 294. In भारतीय पिंगल कोड रो 294 धारा रे कहा जाइछि जे जदि कोनोसी भी सर्वसाधारण स्थान हो किंबा सर्वसाधारण पाख स्थान रे कोनोसी जने व्यक्ति जदि खराब इंगित करे खराब गीत गाए खराब भाषा बा अशालीन भाषा प्रयोग करे ताहले एटा को गोटे क्रिमिनल ऑफेंस बोली धरा जीवो and it will amount the person will be punished with imprisonment up to 3 months or fine or both. ताकू पिला लोकटी को 3 मास रो दंड दिया जीवो जेल दंड किंबा ताकू फाइन दिया जीवो किंबा बोथ फाइन एवं imprisonment दिया जीवो. A person who expresses words, gestures, acts with an intention to hurt the modesty of women, particularly नारी रो मर्यादा क्षुण्ण करिवा पाई जदि किए कोनोसी शब्दर अपव्यवहार करे किंबा अशालीन भाषा अशालीन इंगित देखाए ताहले सेटा सेक्शन 509 of the IPC रे that is again he will be penalized. जो भारतीय पिंगल कोड रो 509 धारा अनुसार ताको मध्य दंड दिया जीवो. यह एक दंडनीय अपराध and this section is referred to as the eve teasing section of the IPC or the Indian Penal Code. And a new legislation on eve teasing was proposed by the National Commission for Women in 1988. आमर जो जातीय महिला कमिशन अछंती 1988 मसीह रे से माने देखिले जे ए ईव टीचिंग स्कूल समयरु बा छोट पिलाटीए झियोटीए घरु बाहरला मात्रे से बहुत समय ईव टीचिंग रो शिकार होउची जहा कि ता मनरे एक असुरक्षित परिवेश सृष्टि करूची एवं ता मनरे अनेक भय सृष्टि करूची से निजकु बाहर स्थान रे बा सर्वसाधारण स्थान रे सुरक्षित मनु नाही एवं से भाबुची जे एटा आरंभ किंतु से आहुरी अनेक प्रकार भायोलेंस बा हिंसा ता प्रति आसी पारे तेणु से माने नेशनल कमिशन फॉर वुमेन बा जातीय महिला कमिशन 1988 मसीह रे कहिथिला जे गोटे नूतन नुआ लेजिस्लेशन आनिया पई ऑन ईव टीजिंग कारण स्कूल कॉलेज गाँ रास्ता घाट बस सबुठी एगुडी का बहुत भाव प्रचलित थिला केवल किंतु एपर्यंत मध्य आमर जातीय स्तर रे ईव टीजिंग लॉ आसी पारि नाही केवल गोटे राज्य जे होची तमिलनाडु इज अ frontline state which has brought a prohibition of eve teasing act प्राय 10 वर्ष परे 1998 रे in 1990 in 1988 it was proposed by the state National Commission for Women and till now we do not have a national policy on eve teasing but Tamil Nadu is the only state which has brought a state legislation against eve teasing in 1998. So remember my dear friends that you can also but under the Indian Penal Code this will be treated as a crime so you can also if you fall prey of it किंतु आमे काहे की fall prey करिबा आमे काहे why should we actually go for practicing ए जो eve teasing बा अशालीन भाषा प्रयोग करिबा एहा काहे की आमे करिबा एथि पय आमे सचेतन हबा आमे एटा करिबा उचित कि नुए कारण ए भाषा आमे प्रथम जिंस भाबिबा जदि मते किए कहि थांता कि परे लागि थांता जदि मोर माँ
किंबा मो भौणी किंबा मोर बुढ़ी माँ रास्ता जीवा बेले एपरी किए कह मत भल लगे कि जदि मत भल लगनी जिते निजे निजक पचार आत्मचिंतन करवा व्हेन वी विल इंट्रोस्पेक्ट आमे केबे हेले एमती करबानी वी विल बिकम नॉट ओनली कॉन्शियस टू एक्चुअली प्रिवेंटिव टीचिंग किंतु आमे आमर सांग एवं आमर जो माने अछंती माने छात्र छात्री आम संगे पाठ पढ़ुचंती किंबा आम परिवेश जो माने अछंती जो माने एपरी कार्य रे लिप्त अछंती तांका मनरे मध्ये आमे सचेतनता आनिबा नारीर मर्यादा किपरि समाजर मर्यादा आमे तांको बुझेई परिबा एवं वी कैन पुट एन एंड टू ईव टीचिंग सो एट योर कॉलेज लेवल यू थिंक that what can you do to prevent eve teasing. The second type of violence that the women faces in public life is stalking. Stalking is unwanted or repeated surveillance by an individual or group of persons, group of persons. तेणु बेले बेले आम गला बेले आम देखे आमको पछे 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 बहुत लोक चालू गोटे गोटे ग्रुप किंबा जड़े लोक चली थाए आम उपरे नजर रखु थाए पाखरे जाऊ थाए एंड दैट इज कॉल्ड स्टॉकिंग. इट इज अगेन मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स वुमेन एंड गर्ल्स. स्टॉकिंग टा बेसी हुए नारी एवं झील मान प्रति. और स्टॉकिंग ऑफ गर्ल्स एक्चुअली एंड वुमेन एक्चुअली झील एवं नारी मान भीतर बेसी हुए जो यंग झील आमर तांकर शैशव थांती किंबा those who are in their adolescent period or in their youthful days. Stalking is a common thing that happens and that also affects their freedom and that also sometimes make them feel that they are insecure in the public spaces and it gives them a very unpleasant experience. कहीं ना जड़े तुम पछे पछे जाऊथबो तुम उपरे नजर रखी रखी जाऊथबो तुमको एटा भल लागिबो कि. तेणु ये जो अनुभूतिटा हुए ताहा एक अति बाजे अनुभूति. आउ एबे कौन होउची ना मोबाइल फोन रोची अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रोची सेथिरे भी मध्य बहुत समय रे आमे कौन करूचे ना कलर्ड रिमार्क पठाऊचे एंड दिस इज कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम. साइबर क्राइम होची गोटे बड़ा टाइप हिंसा. पिला माने तुमे जानिथिबो जे आजिकाली साइबर क्राइम रेट बढ़ी बढ़ी चली. अनेक समय तुमर किए फोटो उत्तोलन करी ताकु से पब्लिक डोमेन को छाड़ी दौची बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग. जिते बड़े इटा तुम्हें करुच बा तुम एगेंस्ट होची ताकु किपरि बंद करिवो ताकु चिंता कर. Technology is good but use it for a good purpose and do it and also think about yes, can I just do the same thing for my sister. मु कौन मो भौणी फोटो आणिकी छाड़ी पारि एपरी. तेणु मु आउ गोटे झीर जिते मर्यादा को मु क्षुण्ण करुच्ची ताकू असमान जनाऊँगी एवं ताकू असुरक्षित करुच्ची. से मु केते दूर युक्तिसंगत मु करि कि ना आउ जो माने भी करुचंती तांको मु किपरि बंद करि परिबि ता उपरे मध्य तुमे चिंता कर. एंड वुमेन दोज हु आर बीइंग स्टॉक्ड कैन कंप्लेन टू द नेशनल कमिशन फॉर वुमेन. जो आमर जातीय महिला कमिशन कथा कहूली जो माने जेतेबेले तुमको जदि एपरी किए तुम पछे पछे जाए तुम उपरे नजरबंदी तुमको रखापी चेष्टा करे यू कैन कंप्लेन टू द नेशनल कमिशन फॉर वुमेन एंड द नेशनल कमिशन ऑफ वुमेन कैन टेक अप द मैटर विथ योर लोकल पुलिस. नेशनल कमिशन ऑफ वुमेन ने जदि तुम्हें कंप्लेन टे दियो ताहले तुमर कंप्लेन को नहीं से माने लोकल तुम स्थानीय पुलिस को कहबे एवं पुलिस मध्य तार नजर रखिबो. एंड जो तुम भारतर जो पार्ट रे था नेशनल कमिशन ऑफ वुमेन ऑफिस दिल्ली रे हेई पारे किंतु नेशनल कमिशन ऑफ वुमेन भारतर जो प्रांत रे तुम था पीपल रिजाइडिंग और गर्ल्स और वुमेन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया कैन लॉज अ कंप्लेन. आउ तांकर ए जो कंप्लेन पाई गोटे नंबर से मान देई थांती एंड दैट नंबर इज 0111 23219750. यही नंबर टी तुम्हें जदि केवल जन दब जे यही समय रे मु यही बाटरे गला बेले मते के स्टॉक करुच्ची दैट मैटर विल बी टेकन अप बाय द नेशनल कमिशन ऑफ वुमेन एंड द लोकल पुलिस विल बी डिप्लॉयड टू टेक केयर ऑफ दैट. तेणु यह मध्य एक क्रिमिनल ऑफेंस एंड दिस इज अगेन अ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. बट
before doing how we have to think what are the ethical, is it not a very bad practice, is it not an inhuman practice we are doing, आम पछरे किए आसिले आमको किपर लागिबो जदि आम को नजर रे रखिबो तेनु मु काई आउ जन को रखिबी आ जदि भी किए रखुची ताको काई सचेतन कराइबिनी जे जो नारीटिए रास्ता रे चालुची. Public space is meant for both boys and girls. We have to give them that particular safety, that particular security, and that is a right to move about. So we cannot put a restraint on her right to moving about by stalking her. So these things have to be thought among you, and you have to give a conscious thought to it, and you have to develop your own strategy how in your surrounding you can put an end to these practices. Then we will be coming to the third type of violence women faces, that is very common, and you must be knowing that is nothing else than your rape and gang rape, जोटा को आमे बलात्कार एवं गण बलात्कार कहूचे. बहुत समय आम गणमाध्यम आमे देखीचे एगुड़िकर बहुत गुड़िए न्यूज आसी थाए, संवाद आसी थाए, एंड दे आर केवल यह ओडिशा रे नुहे भारतर सबु प्रांतरे अच्छी एवं विश्व रे मध्य एई रेप एंड गैंग रेप आर भेरी भेरी कॉमन. एंड तुम्हें जदि जानी पिला माने बहुत समय आमर जेतेबेले युद्ध लगुची, युद्ध समय अनेक समय नारी माने किपरि जो जगह गुड़िक होची कन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया जोठी द्वंद्व बा युद्ध लगी थाए सेठी नारी मानू किपरि अशालीन व्यवहार करा जाए, किपरि तांको माने ये जो बलात्कार शिकार होती ताहा तुम्हें जानी थी. एंड दैट इज कंटिन्यूइंग फीचर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्लोबल टू द लोकल लेवल. आम परिवेश ठारू आरंभ करी सारा विश्व जाइका नारी माने यही प्रकार हिंसार शिकार होती. आमे बलात्कार व्हेन वी गो टू डिफाइन रेप, व्हाट इज रेप? दैट इज द अनलॉफुल, दैट इज एन इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट इज कैरिड आउट फोर्सिबली अगेंस्ट अ गर्ल और अ वुमन्स विल. केबे हेले वुमन्स विल न थाए, तार विल को प्राधान्य दिया जाए नहीं. एठी आमे सब बेले कौन करू अनइक्वल पावर को नेकरी आमे कहू जे पुरुषटे रेप कर दिए नारी की कौन सी परिवेश बा परिस्थिति रे किंबा विरक्त होई गले किंबा ताको माने देखैवा पाइंका समाज को तार शक्ति पहर कर दिए. दैट इज नॉट अ प्रॉपर थिंग बिकॉज पावर शुड बी इक्वली हैंडल्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन. देयर शुड नॉट बी अनइक्वल, दे आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ पावर. किंतु आमे नारी मानकु पैट्रियार्कल सोसाइटी रे जो पुरुष प्राधान्य समाज रे आमे पुरुषर पौरुषटा को एई बाटरे आमे ये करू. किंतु दिस इज नॉट द मीडियम थ्रू व्हिच यू शुड शो योर प्रिडोमिनेंस इन सोसाइटी. इफ यू वांट टू शो योर प्रिडोमिनेंस इट इज बेटर आमे भाबिबा आमे किपरि नारी मानकु नै एकाठी चली परिबा, आमे एकाठी गोटे सुंदर समाज गठन करिबा, तापरे आमे चिंताशील हबा. और जेतेबेले गण बलात्कार आमे कथा कहू, गैंग रेप इज द सेम एक्ट बीइंग परपेट्रेटेड बाय मोर देन वन मैन और अ ग्रुप ऑफ मैन. एथिरे आहुरी असुंदर होता है जे गोटे ग्रुप ऑफ मैन दे स्टार्ट physically assaulting a woman and without her will. And again this is also a very barbaric practice. यह गोटे बड़ हिंसात्मक माध्यम जो थे कि पुरुषटे नारी को हिंसार शिकारग्रस्त करई थाए. एगुड़िक कहीं हुए ना बहुत समय जितेबले इच्छा आम करूँ जस्ट टू शो देयर व्हिम्स देयर स्वीट विल दे पीपल आउट टू टेक रिवेंज ऑन फैमिलीज. बेले बेले दुईटी परिवार मध्य द्वंद्व थाए, तेणु से कौन करती ये जो पारिवारिक द्वंद्व को मध्य सेमाने ए रेप गैंग रेप थ्रू रे सेमाने तांकर नारी माननकु झियो बोहू माने एमानकु सेमाने बलात्कार बा गण बलात्कार शिकार करिकरी तार सेमाने दे वांट टू टेक प्रतिशोध जोटा रिवेंज वी आर टेलिंग. एंड रेप्स एंड गैंग रेप्स हैव बीन टेकिंग प्लेसेस
क्रॉस एजेस बहुत दिन धरी ये सबू ये चली रही आम इनसीडेंट्स आम प्रत्येक दिन गणमाध्यम देखुचे आम जदि देखा भारतर ये जो गैंग रेप कथा बा रेप कथा आम देखा जे एगुड़िक बहुत समय सबुठू आमर मन थी सबू छात्र छात्री तुम्हें माने छोट थी व्हेन यू वर स्मॉल एंड इट हैपेंड इन 2012 and on 16 December 2012 and that is popularly known as the Nirbhaya case and the girl was Jyoti Singh, the 23-year-old female physiotherapist intern who was traveling near Munirka. It happened in a bus, lone bus, where a group of boys were going and they gang raped her in South Delhi. And this Nirbhaya case created not only a hue and cry in our country, but it shook the entire world. It was so barbaric that सारा विश्व ही एथिरे मर्माहत होइथिला and into से बंद है नहीं. In 2013 Mumbai gang rape case, just after a few months after the horrifying Nirbhaya case started took place. A 22-year-old photojournalist was gang raped by 5 people and which included a juvenile जहाँ को बाल अपराधी कौचे 18 वर्षरु कम पिला से मध्य से शामिल होइथिला. This was known as popularly known as the शक्ति मिल केस. ये जो देखंतु बाल अपराधी ना रे आमे तांको कौन करूचे कौचे ना से जानी पारि नथला ताले हिंसाटा आमे पिला को पिला दिनरु शिखौचे. तेणु निर्भया केस हला किंबा एतिरे हला गण बलात्कार किपरि भारत रे हेछि मु तारीख दउछि एंड देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस. आउ गोटे गाल जो कात्रा विलेज रे हेइतला यूपी रे सेता बेले भी गोटे हेइतला शेष को से पिला को से माने कोन करले ना दुईटी माने अप्राप्त वयस्क झियो भावंतु माने केते हिंसात्मक एटा हेइ पारे तांको गैंग रेप करी बा गण बलात्कार करी तांको गच्छरे टंगेई देले. दे वर हैंग फ्रॉम ट्रीज एंड दिस इज नोन एज द बदाउन गैंग रेप केस ऑफ 2014. 12 रे हेला बंद हेलानी 13 रे हेला बंद हेलानी पुणी हेला 14 रे तापरे शुणिथिबो पिला माने एबेर घटना 2017 आउ सेतबेले उन्नाव रे गोटे गैंग रेप केस मध्य हेइथिला. उन्नाव रेप केस रे हेइथिला. एथिरे कोन हेला ना सेथिरे किपरि एथिरे राजनेता माने भी इन्वॉल्व थिले एवं एथिरे केमती पिला को किडनैप करी नै किरी ताकू रेप करा जाइथिला. सेमती कठुआ रेप केस जोटा हेइथिला पिला माने कठुआ रेप केस ता जम्मू एंड कश्मीर रे हेइथिला. ए जो कठुआ रेप केस रे गोटे गरीब आदिवासी झियो को रेप करा जाइथिला. ता ना थिला आसिफा बानू बोली. ये जो आसिफा बानू केसटा मध्य भारी हृदय विदारक होइतला. इट वाज वेरी वेरी हार्ट थ्रॉबिंग इन कैरेक्टर बिकॉज शी वाज आल्सो गैंग रेप्ड इन अ स्मॉल विलेज टेम्पल एंड इन कठुआ एंड शी वाज आल्सो मर्डर एंड मान ताकू सेडेटेड कर देले ताकू निशा दे करी ताकू गैंग रेप करतले. कैन वी जस्ट थिंक ओवर हाउ बार्बरिक हाउ जोटा कौच आम बहुत नृशंस ए लोक किपर एत नृशंस हुंती. तेणु आम समाज कौ आड़ को जाऊँगी. तेणु आम ये नारीर सुरक्षा कथा कहूने समाज और हिंसार कथा वी आर ब्रिंगिंग इनटू डिस्कशन. ए देखु ए आमर कौन कौन रोची आमर न्यायिक दृष्टिकोण आम भाविबा आम जो कौचे लीगल इज ओनली जस्ट वी आर गिविंग दैट आम गोटे लॉ करुचे किंतु लॉ करवा दरकार कौन आम भितर जदि सचेतनता आसब. तेणु आम ये जो एथिक्स बा वैल्यूज कथा कहूचे बा आम जो नैतिकता कथा कहूचे आमर जदि गोटे नैतिकतार परिमापक रहिबो आमर जदि नीतिगत किछि नीति नियम रहिबो आम निजर कॉन्साइंस आवर कॉन्साइंस विल प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग दिस. एंड आई विल टेल यू इन अ जुडिशियल verdict Justice Banumati said that the offenses against women are not women issues alone. आमे सब बेले को एटा नारीर समस्या एटा नारीर समस्या आद नुहे. दिस इज अ ह्यूमन राइट. एटा होची मानविक अधिकार. तेणु समस्त मानवंकर एटा गोटे सामाजिक समस्या. इट इज अ मानविक अधिकार
ह्यूमन राइट्स इश्यू तेणु एटा को आमे जेंडर कहीकि आमे ये करबानी याको आमे समाज रे एक समस्या बोली धरिबा तेणु आमे देखिबा आम नारी मानकू आमे केते सेफ्टी और सिक्योरिटी पब्लिक स्पेस रे देई पारुचे तेणु आमे सेथि पाइका आमे कोन करबा ना गोटे निर्भया फंड भी गवर्नमेंट करथिले 2013 मसिया रे सेते बेले कहैतला जे ए निर्भया फंड रे 100 कोटी टंका 100 crores will be given for the empowerment safety and security of the women and girl children एटा सरकार कर गोटे भल पदक्षेप थिला एंड इट वाज वन स्टॉप सेंटर थिला और सखी जाको आमे कहूचे ए जो सखी आमे देखिबा रही कारण जिते गोटे झीटीए भिक्टिम हुए भायोलेंस ताकू सपोर्ट देवाई सेंटर रही आज आम ये वी विल एंड आवर लेक्चर फॉर टुडे सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट द how a girl passes from the family to the community and society, how in every stage of life and in every space of this society a woman encounters violence and what are the forms of violence. We have talked about 3 types of violence. One is eve teasing, the second one is stalking, the third one is rape and gang rape. And what are the ethical issues involved in how as young students we can actually think about it, let us ponder about it, how we can become the people who can put an end to such violence and create a society which is totally violence free. With this we will wind up this class and from this we will be taking up in our next class. Thank you.